Yes. So today we are going to start with the revision of political parties. Is it clear? So in the political parties, first thing, you don't have the pol science book. Yesterday I had given a message also, and today also. Why? When you are coming to school to attend just 4 periods, at least at that time you should know that what you are bringing. If you don't have the book, then how you will do? So first of all, in the political parties, what we are going to do is, the first thing is define. Here, you must know the definition. Yes, those who are sitting here in the class, can anyone tell the definition? Yes, beta. It is a group of like-minded people which come together and contest election to form a government. Very good. Yes. So it is the organization. It is an organization of like-minded people who come together, clear, and they contest elections after the party of which they are the member has won majority. Is it clear? What do? They form the government. Is it clear? So this is the basic definition about political parties, which will be required every time. Every time you will require this, that this is the basic definition of political party. Clear? Now next is the components. Components, right? We have 1, 2, and 3. Leaders? Yes. Active? Yes, active members and supporters. Good. So, leaders, we know those who are holding important positions in the party, that can be the party president. Is it clear? No. No, within the party, beta, we are not talking about government. हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी में लीडर्स की बात कर रहे हैं. Those who are heading the party. Clear? Like leader, party president, party vice president, party secretary. जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इज अ नेशनल पार्टी, बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी. ठीक है, इनकी पार्टीज की जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया हैं. ठीक है, हमें पता है ना. ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया कैसे मैनेज हो रही है पार्टी? जो ऑल ओवर इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को हम मैनेज कर रहे हैं, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें एक सिस्टम चाहिए ना. उस दिन मैंने एक कटिंग भेजी नहीं थी आपको, शेयर की थी आपके साथ ग्रुप में. क्लियर? पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, मिसेस सोनिया गांधी लिखा हुआ था ना, वो है लीडर. ये वाले लीडर्स वो हैं. ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं, उन लीडर्स की जो पार्टी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं. जो हम मिनिस्टर्स की बात करेंगे वो तो गवर्नमेंट बन गई ना. हम बात कर रहे हैं बेसिक जो है, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स. पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या होता है? ठीक है, तो लीडर्स पता लगे अब. जैसे मैंने आपको बताया नहीं, स्टेट लेवल पे लीडर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडर होते हैं जो पार्टी को मैनेज करते हैं. आगे मेंबर्स, एक्टिव मेंबर और सपोर्टर्स को कौन मैनेज करेगा? लीडर्स ही मैनेज करेंगे ना. लीडर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर दिस एंड दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर दिस, फॉर द पार्टी अफेयर्स. अब सपोज करो आगे जनरल इलेक्शंस आ रही हैं, राइट? पूरी ऑल ओवर इंडिया में जनरल इलेक्शंस होनी है. इट्स नॉट असेंबली इलेक्शन, 4, 5, 6 स्टेट्स में इकट्ठी होनी है. आपने देखा नहीं, अब नाउ जो सपोज करो प्राइम मिनिस्टर है, ही कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. कहीं पर अमित शाह जा रहा है, कहीं पर वो गडकरी जा रहा है, कहीं पर वो दूसरा जा रहा है. अलग अलग पर्सन्स आर गोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस. देखा ना आपने? वो कौन है? पार्टी लीडर्स हैं, जो अलग अलग जगह जाके क्या करेंगे कि कैंपेनिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सी रैली कहां पर होनी चाहिए. ठीक है, स्पोक्स पर्सन, पार्टी स्पोक्स पर्सन जो होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव लीडर्स, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पे. समझ आया? सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू लीडर्स, दिस इज द मीनिंग. क्लियर?
Active members, those who are part and parcel of the party. Yes. Yes. Clear? Those, like, again, now suppose leader is of the state level, right? So he need other subordinates with him. तो वो जो subordinates कौन से होते हैं जो फ्यूचर में लीडर बन सकते हैं, ठीक है ना? जो सबऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं जो फ्यूचर में उस पार्टी का लीडर बन सकते हैं, वो कौन है? एक्टिव मेंबर्स है। क्लियर? एंड उसके बाद सपोर्टर्स, जिनके बिना पार्टी चल ही नहीं सकती। चाहे हमारे पास लीडर्स हैं, चाहे हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हैं, बट सपोर्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट विदाउट विच द पार्टीज कैन नॉट फंक्शन। सपोर्टर्स हैं तो वोट मिलती हैं। इज इट क्लियर? सो सपोर्टर्स, ये नहीं कहने का मतलब है कि लीडर है तो ये थर्ड नंबर पे है, इट समवेयर, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो सपोर्टर्स आर equally important. So under the components we have done that we have the clear leaders, active members and supporters. Now next comes the functions. Clear? Functions of the political parties. We have 7 important functions as listed in your book. Clear? As given in your book, we have 7 important functions. You don't have a notebook also to write anything. You don't have a pen also. 7. Clear? The first is, it's very clearly given in your book. Contest elections. Second, forms, policies and programs. Third, they form and run the government. Next, yes. Next, role of opposition and Awaiting the government machinery and welfare schemes. Clear? Because we know that we have high level of illiteracy in India. हमारा जो illiteracy का level है, it's very high in India. So it becomes difficult. If suppose a person is illiterate, he will not know about the various schemes of the government because he is not reading the newspaper. He is not listening to the news. He will not be aware. कई बार क्या होता है कि हम लोग aware भी होते हैं, but हमें पता ही नहीं होता कि इसका आगे process क्या है. Suppose government has a medical card facility. Government ने एक medical card की facilities दी है for the poor people who are suffering from cancer. And we know the treatment of cancer is very expensive, right? And maybe the poor people are not able to afford. But if a person is illiterate, he doesn't know about the scheme. Clear? और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है जहां उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है उसका. क्लियर? तो क्या होगा? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो आगे सपोर्टर्स और एक्टिव मेंबर्स होते हैं, थ्रू देम they are making the public aware about the various schemes. अब आपको अगर 3 marks में क्वेश्चन आता है functions का, is it clear? So without introduction nobody will write the answers this time in PT3. Is it clear? Marks will be deducted if you are not writing the answer properly. And then you write the functions. If it is for 3 marks, you just have to list all the 7 functions है ना, ठीक है? If the question is of 3 marks, then what you have to do? You just have to define that yes, these political parties are an important part of democracy, representative democracies. They perform the following functions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? But if the same question comes in 5 marks, right? There are 2 methods of doing it. One is that you can write the function and explain. If you know the explanation, you have the time. Second is you can list all the functions first. And then together you can write one common explanation of all the functions mentioned above. But for 5 marks, details are required. You cannot just skip the details. Explanation. I am telling you how a same
question has to be attempted in 3 marks and in 5 marks. Is it clear? Now next, we have systems. Necessity we are doing side by side. That political parties are a necessity. अगर हैं political parties तो ये सारा कुछ discuss होगा. अगर political parties है ही नहीं है तो then it is not, we cannot discuss all these things, right? These can only be discussed, that these can only be discussed if we have political parties, right? So functions. Now next is party system. Is it clear? Yes. So next is party system. Now party system we have already done. We have the, yes, one party system, two party system and multi-party system. We know that we must have the clear-cut definition. This should not be there, that the country which has one party, it is one party system. In the country in which there are two parties, it is two party system. This is not the definition. Is it clear? Proper definition should be written with the correct example. You must know the correct example as well. आपको वो example clearly पता होना चाहिए. ठीक है? At least you must know the example which is given in your book. You don't have to find examples. आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है. Your NCERT books have all the material which is required for learning. उसमें example बिल्कुल clearly दिए गए हैं, right? On page number 77, with the definition, examples are very clearly given. And one more thing after this, party system हो गया, one party, इसकी related activity also you have seen. I had put that activity in the group. So we had done that activity, that also you have seen. Next है that how a country adopts this. What is the reason? Clear? Or we can say what is the factor on which it depends whether a party will have one party system, two party system or a multi-party system. Is it clear? ये कौन सा factor है? Clear? See in your book, it is very clearly given, page number 77, second paragraph. How do we decide that which party system is there in the country? It evolves over a long time. कौन से factors हैं? Page number 77 पे देखो, second paragraph में दिया हुआ है. It evolves over a long time, first. Second, depending on the nature of the society. Third, its social and religious division in the history of politics and its system of election. ये हो गए factors on which the party system depends. समझ आ गया? और एक हमने इसके ऊपर पैराग्राफ में वो 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं अलायंसेस के. यस, ठीक है ना? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट. सो नेक्स्ट टाइप्स. अब ये टाइप्स जो है ये इट इज ओनली, मैंने आपको पहले भी बताया था, वी आर डूइंग इन कंटेक्स्ट विद इंडिया. क्लियर? नेशनल पार्टीज, यस, regional, or we also call these as state parties. Clear? National parties की definition आपने की है, आपको example पता है बिल्कुल clearly. Similarly आपने regional parties की definition की हुई है, आपको example पता है इसके, ठीक है? That is the main difference कि इसका क्या है difference. And जो example मैंने आपको बोला आपकी book में दिए हैं, please learn those examples only, so you will not have any problem. अब मेन आ गया हमारे पास आइडियोलॉजीज ऑफ द नेशनल पार्टीज. नेशनल पार्टी की आइडियोलॉजीज आ गई ना. तो नेशनल पार्टी की आइडियोलॉजीज हैं वो क्या है? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट ब्रीफली. You have already made the table. I had asked you to make the table: inception, ideology, and present status. Present status is not mandatory
to write the present status, but being in 10th standard, and if we are talking about the political parties, at least about the 2-3 main parties we can write. Is it clear? Depending on what kind of a question you get in the examination. But we need to be prepared for that. So first of all, we have the Indian National Congress. इसके नीचे उस पे आ जाओ and see the party espouses. Espouses का meaning मैंने आपको पहले भी बताया था. Stands for, believes in, advocates, promotes. किसी भी word अगर आपको espouses नहीं याद रहता, आप ये जो मैंने इतने सारे words, 4 words बताए आपको, आप कोई भी word use कर सकते हो. Clear? Stands for secularism, welfare of weaker section and minorities, supports economic reforms with a human face. Economic reforms with a human face means, as we have done globalization, WTO हमने पढ़ा था ना कि somewhere or the other the developing countries suffer. तो वो क्या थी? Economic reforms पढ़े थे ना हमने. So it means that अब आजकल क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है कि कॉर्पोरेट को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है? इट मीन ह्यूमन फेस का मतलब है कि अगर हम कोई रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो उससे हमारी सोसाइटी में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, बीजेपी वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन and ban on religious conversions. Conversations नहीं है, conversions है. It means that जैसे आपने पहले पढ़ा था ना in the freedom struggle in 8th standard about Christian missionaries. Christian missionaries के बारे में पढ़ा था ना, याद है आपको? 8th standard में social reforms का जो chapter था, in that we had read कि जो Christian missionaries थे, there is no fixed guarantee about it. Maybe they were going just to propagate the religion of Christian. But if people are impressed, clear, and we are able to convince the people, so they got converted into Christianity. Similarly, people can get converted to any religion. We have full religious freedom in India, but not forced conversion should not be there. ठीक है ना? So next is Bahujan Samaj Party seeks to represent and secure power for Bahujan Samaj, which includes Dalit, Adivasi and OBCs and religious minorities. Religious minorities का मतलब होता है in number those persons who are not a majority as far as religion is concerned in a concerned country, not all over India, in a concerned country. Next, stands for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and oppressed people. नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. इनकी आइडियोलॉजी लर्न करनी बड़ी इजी है. रशियन रेवोल्यूशन, सिंपल. रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था दिस कार्ल मार्क्स इज सेम. इट इज नॉट इन दैट, इट इज इन पॉलिटिकल साइंस एंड इन हिस्ट्री कार्ल मार्क्स हैज चेंज्ड. This is same. When we are saying Marxism, it means we are referring to the theory propagated by Karl Marx. और कार्ल मार्क्स की थ्योरी हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी है, क्लियर, इन रशियन रेवोल्यूशन. ये सारा वही है, नथिंग एल्स इज देयर. मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. इंपीरियलिज्म यू ऑल नो, right? Colonialism or imperialism is same, we know. And communalism does not stand for community over here. It stands related to religion. आपका एक चैप्टर है gender, religion and caste. That is not in the syllabus now. Earlier it used to be in the syllabus. Pol science में ही 10th standard में one chapter is there, gender, religion and caste. अगर हम वो चैप्टर पढ़ते तो आपको ये वर्ड क्लियर हो जाना था. But I'll explain now. Communalism refers to when religion takes extreme form. When religion takes extreme form. Extreme form का क्या मतलब है? When we become fanatics, fanaticism. Communalism. Fanaticism means
When I think that my religion is supreme, then the others. I don't see right or left. मैं क्या देखती हूँ, मैं सिर्फ अपने रिलीजन को देखती हूँ और उसी को सोचती हूँ कि दिस इज द सुप्रीम एंड वट एवर शुड बी डन अकॉर्डिंग टू वट माई रिलीजन प्रोपोगेट्स. When I start thinking about this, when I put my religion before everything, then it means communalism, right? And we have done communal rights, ठीक है ना? तो वो religion के साथ connected हैं. Here what we are doing. So they do not propagate any such thing. They are against this. Clear? Now the word I hope is clear to you. Next, they are critical. Now, yes, one more thing is there. Accepts democratic elections as useful and helpful means of securing the objective of socio-economic justice in India. Socio-economic justice. You have read the preamble? प्रियम्बल पढ़ा है ना आपने 9th स्टैंडर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशनल जब हम कर रहे थे तो उसमें प्रियम्बल था ना आपकी बुक में, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. In the preamble, when we read the preamble, we read this. Clear? So justice means we cannot bring complete equality in the society. When different human beings are there, differences will arise. But what we can do, we can reduce those differences by our thinking, by our policies and programs. एक हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स, एक है फंडामेंटल ड्यूटीज, एक है डायरेक्शंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. याद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की है ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर्ड ही कहता है दैट these are those directions. उसमें लिखा है economic equality, but it is not possible to give economic equality because all people have different potential. First chapter of economics किया है ना हमने, why different people have different developmental goals, because life situations and capabilities of the people are different. How can we bring economic equality? It's not possible in the society. But what we can do, we can reduce the gap between the rich and the poor. Directive principles of state policy क्या कहते हैं हमें? वो कहते हैं, वो directions हैं किसके लिए? State governments के लिए, to make such policies and programs which helps in the reduction of economic gap between the have and the have-nots in the society. अगर हम कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे तो ये गैप इंक्रीज होता जाएगा. जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे, जो पुअर है वो और पुअर होते जाएंगे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इट मींस. क्लियर? And next is critical of new economic policies that allows the free flow of foreign capital and goods into the country. Again, there should be certain restrictions. We know that if we will give a free flow, no doubt globalization is important. ठीक है ना? हमें stabilize करने के लिए अपनी economy, liberalization and economic globalization is very important. But at the same time, it should not be done at the cost of that we are harming our own economic interests. And next is Communist Party India, CPI, Marxism, Leninism, secularism, democracy, opposed to forces of secessionism and communalism. Communalism clear है? Secessionism का मतलब होता है कि लोगों को डिवाइड करना, सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि लोगों को हम डिवाइड कर दें, सोसाइटी में आपस में डिवाइड कर दें. जैसे ब्रिटिशर्स की होती थी ना पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की होती थी. एंड दे आर democracy as a means of promoting industry of working class, farmers and the poor. That's why आप देखो उनका जो सिंबल है सिकल एंड क्रॉप्स, सिंबल देखो, ठीक है. दूसरा सिंबल भी देखो आप, इनके सिंबल ही ऐसे हैं that they clearly tells that what is the party policy. Clearly show देती है, बट पार्टीज का भी कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस होता है उसमें, somewhere or the other, depending on the ideology. अब किसी की आइडियोलॉजी ऐसी है उसको हम कुछ और ही दे देंगे. Is it clear? Sometimes. So from the symbols. And next is
Nationalist Congress Party espouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. So ये सारे कॉमन से फीचर्स हैं जो हमारी कंट्री में ऑलरेडी हैं. Equity, yes, means that to reduce the difference between the rich and the poor. Now next we have challenges to the political parties. इसमें 3 important हैं. Lack of internal democracy we have done. Next is money and muscle power, yes, and meaningful, yes, dynastic rule and meaningful choice. And reforms में हमने किया है that if and when. Clear? Reforms में, yes, reforms if and when these will be applicable, they will definitely bring a difference, a change in the working of the political parties. And if it brings a change in the working of the political parties, definitely overall the political system will benefit and we will have better governing and working. Is it clear? So this is about the revision of the chapter